to have you all here. And I'm just checking if you are able to see me, hear me out, and chat with me. बहुत ही अच्छा लगता है. आज Tuesday at 4 है. We are going to look at something different. We are going to look at option strategy today. That in this kind of a market, which type of option strategy is working, and you can clearly see the levels are working very well. On Nifty 21,550 का एक लेवल दिया था मॉर्निंग में. मुझे लग रहा था कि वो शायद ब्रेक होगा और नीचे जाएगा मार्केट बहुत शार्पली, लेकिन वैसा नहीं हुआ. मार्केट वापस से रिवर्स हुआ एंड इट अगेन वेंट ऑन द अपसाइड. 21,760 780 इज द हर्डल एंड अराउंड 21,840 उसके ऊपर. सो रेंज में है. सो मेरा अभी जस्ट आई एम नॉट श्योर इफ यू आर वाचिंग me on CNBC. I was on CNBC from 2:30 onwards. And if you were watching on CNBC, then you might have realized I've talked about the range and the strategy on Nifty. And having said that, it's very, very important to trade basis of price action. We look at how to look at the price action and how to club it with time cycle. हम वो दो combine करेंगे. And we'll also look at volume profile. Why is 21,683 acting like a classic magnet? And do you know what is 21,683? Every one of you are, guys, are you there with me? I want to very warm welcome Rajendra, Mangal. I can see the chats now. Arun, Ramavtar, great to see you also here. Jitin, Pallavi, pleasure. And it's very, very interesting to see that. Fantastic. Saurabh, great to see you also here. I think the mentees are just joining in. So many of you are just joining in, and the market is actually not doing much. It is stuck essentially in a broad range with a lower high, lower low formation. और कल के दिन में PSU banks को इतना नीचे गिराया था जैसे कि वापस उठेगा नहीं. PSU banks नहीं, sorry, PSU stocks को. And आज फिर से PSU stocks में you can see those rally. So it's a very, very volatile market. If you look at it, on one hand, you have Hindalco, that is down by nearly, that was down by nearly 14-15% during the day. When did you last see Hindalco falling by 14-15% in the morning itself and trying to recover some to some extent? And that's crazy, right? When you see the large cap stocks start behaving like a mid cap, so इससे better तो mid cap में ही risk ले लेते. कम से कम पैसा भी ज्यादा बनने की chances होती क्योंकि large cap is started behaving like a mid cap stock. That is what we can say. And many are talking about the Paytm also, and there is no respite absolutely over there. And overnight, अगर आपने किसी ने Paytm लेके रखा होगा, you can see a disaster happening in your portfolio. But that's how the stock markets are. That's why we need diversity, and that's why we need to create a portfolio rather than betting only on a one stock. तो बहुत बार questions पूछा जाता है मुझे कि what is the top one stock you want to bet on? I said, boss, I'm not betting on top one stock. If I have to bet on, I'll bet on top 5 stocks or top 10 stocks. क्योंकि वो 5 या 10 में से कौन से स्टॉक्स चलेंगे मुझे भी नहीं मालूम. एंड जो चलेंगे वो अच्छे चलेंगे, और जो नहीं गए वो हमें पता है कि स्टॉप लॉस है उनके लिए. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू बी लुकिंग एट इट. और अभी का जो मार्केट है, इन द करेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मार्केट, इन द करेंट ट्रेंड ऑफ द मार्केट, दिस इज अ मार्केट वेयर यू विल हैव द बोथ. You have to look at it from the perspective, it's a scalpers market. Scalpers का मतलब पता है आप लोगों को? And people who are there on YouTube, if you want to join with me on the Zoom platform, you can join here. I'm just going to share across the link across right now. Are you with me? And do not forget to subscribe to the channel, like and share. और बहुत सारे कमेंट डालिए आपके, तो मुझे पता चलता है कि भाई आप लोगों को इस टाइप के वीडियोस भी पसंद आ रहे हैं. सो डू नॉट फॉरगेट टू पुट अक्रॉस योर कमेंट्स ऑन द चैनल. सो चलेंगे आगे, अभी बढ़ेंगे, देखते हैं कि मार्केट में क्या करना चाहिए. सो लेट मी जस्ट वेरी क्विकली ब्रीफ आप संक्षेप में क्या हो रहा है. Nifty has been forming a lower high, lower low pattern. There is no second thought about it, and it is not breaking above the prior candle high on closing basis. आज attempt किया था लेकिन close नहीं कर पा रहा है. So that is going on. Second thing is 21,683 level जो gain magnet है. So 21,683 is working like a super magnet. I'll share across the chart very quickly with you on gain magnet, which means prices उसके नीचे जाता है, फिर से उसके उधर आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर उधर आता है. So it acting as a mean reversion level. Mean reversion means that prices go above and below, but the average of 21,683 is maintained. This is also the level
विच इज प्रिसाइजली द वॉल्यूम प्रोफाइल एरिया। वॉल्यूम प्रोफाइल का मतलब है जहां पर बहुत सारे वॉल्यूम्स हो चुके हैं, वो एरिया है 21,683। वो कैसे पता चलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ऐसे मार्केट में जब ब्रॉड रेंज में है, so I've been bearish of course, and I've been talking about it, but I've been short on calls. I've bought puts also, but in the morning I squared off my put positions क्योंकि प्राइस एक्शन देके रिवर्सल लग रहा था। बट शॉर्ट कॉल्स को स्क्वायर ऑफ नहीं किया, शॉर्ट कॉल्स को कन्वर्ट किया स्ट्रैंगल में। आई एम आस्किंग, आर यू फॉलोइंग मी ऑन ट्विटर? ट्विटर फॉलो कर रहे हैं क्या आप लोग? मैं ट्विटर पे मॉर्निंग में ही डाल दिया था कि शॉर्ट कॉल्स को स्ट्रैंगल में कन्वर्ट करना है, जिससे क्या होगा कि हमारा जो पोजीशंस है उसके ऊपर आरओआई और बढ़ जाएगा। आई टॉक्ड अबाउट इट इन द लास्ट ब्रह्मास्त्र सेशन ऑल्सो, दैट converting a short call into a strangle results into a much better ROI than I was originally getting, provided market then remains in a broad range and we are shorting into a deep strangle. So कैसे करते हैं कन्वर्ट? कॉल जो राइट कर रखे वो तो है ही, आप उसके सामने पुट राइट कर दो, मार्जिन रिक्वायरमेंट भी कम हो जाता है उस सिनेरियो में। सो दैट्स हाउ यू कन्वर्ट दैट ऑप्शन स्ट्रैटेजी इन योर फेवर। सो दैट्स व्हाट आई डिड एंड आई आल्सो ट्वीटेड इट अक्रॉस वेरी वेरी मच। आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको खाली दिखाना चाहूंगा। आई एम नॉट श्योर इफ आई अनाउंस दैट आई हैव लॉन्च्ड अ न्यू ऐप इन द नेम ऑफ आशीष क्याल, एंड आप लोगों ने डाउनलोड किया है कि नहीं वो ऐप? मैं वहां पर प्ले स्टोर का जो पैनल है वो ओपन कर देता हूँ। सो हमारा अर्लियर ऐप था आशीष क्याल ट्रेडिंग गुरुकुल। वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम दैट ऐप टू दिस न्यू ऐप विच इज आशीष क्याल। प्ले स्टोर पे जाइए दोस्तों, अभी का अभी डाउनलोड करिए आशीष क्याल के ऐप को, और लिंक मेरी कलीग शेयर कर देगी। अगर आपके पास में iOS है तो माई कम्युनिटीज ऐप है, उसकी भी लिंक my colleague will share across so that you are able to download the app, and here it is in front of you. You can simply click on the link and you will be able to download it. और मैं वहां पर हमारी रिसर्च रिपोर्ट भी पब्लिश करूंगा। सो लॉट ऑफ डिस्कशंस कैन हैपन देयर। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ऐप इज कम्युनिटी है, आप भी चार्ट पोस्ट कर सकते हो। मेरे अलावा कम्युनिटी में आप खुद भी ये चार्ट को पोस्ट कर सकते हो, आप खुद भी शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, जैसे ट्विटर पे होता है। बट ये फोकस्ड कम्युनिटी होगी। ट्विटर पे तो बहुत सारे जनों के होते हैं, ये फोकस्ड डिस्कशन होगा। एंड यू कैन ऑल्सो चैट विथ मी, देर इज एन ऑप्शन देयर। सो बहुत सारी चीजें हैं, यू कैन गो थ्रू दैट लेटर ऑन, बट डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड। एंड यूट्यूब पे भी शेयर कर दीजिए लोगों के साथ में जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, डाउनलोड कर लीजिए। iOS लिंक भी है, तो आपने जो YouTube पे शेयर किया उसमें मेंशन नहीं किया है कि iOS लिंक कौन सी है, मतलब कंफ्यूजन ना हो जाए। सो यू नीड टू मेंशन iOS लिंक। एंड यहाँ पर यस, सो यहाँ पर अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेट मी नाउ शेयर अक्रॉस वेरी क्विकली माई गेन स्क्वायर ऑफ 9 एक्सेल, एंड आई एम गोइंग टू डू दैट, नॉट एक्सेल, वो तो मैं आप लोगों को दूंगा बाद में जब हम काल चक्र करेंगे। मेरा गेन स्क्वायर ऑफ 9 चार्ट, गेन स्क्वायर ऑफ 9 चार्ट को शेयर करने के पहले मैं आप लोगों के साथ में वॉल्यूम प्रोफाइल का जो चार्ट है वो शेयर करता हूं, क्योंकि उस लेवल पे जहां निफ्टी आज क्लोज हो रहा है, जिसके आसपास मूव हो रहा है, उस लेवल पे बहुत ह्यूज वॉल्यूम्स हुए। सो लेट मी जस्ट शेयर अक्रॉस वेरी क्विकली दी वॉल्यूम प्रोफाइल, and then we will look at gain square of 9 also. Just let me share the screen, and I'm sure you are doing well. Here is the link. So we are going to look at volume profile, and we have done in detail about options मंत्र का जो सेशन था हमारा, उसमें हमने वॉल्यूम प्रोफाइल को बहुत डिटेल में देखा है दोस्तों। बट अगर आप यहाँ पर आज देख रहे हो वॉल्यूम प्रोफाइल पे, यू कैन क्लियरली सी अ ह्यूज वॉल्यूम हैज हैपेंड at the level. This is futures chart and around 21,750, which is translating into a spot chart। अगर आप देखेंगे 21,683 का जो लेवल है वो यही लेवल है जिसके ऊपर ह्यूज वॉल्यूम्स मार्केट ने किए। कैन यू सी दैट एवरीवन इज एबल टू सी दी वॉल्यूम प्रोफाइल चार्ट दैट आई एम शोइंग राइट नाउ वेरी क्लियरली? सभी लोग देख पा रहे हैं? बिकॉज आई नीड टू नो दैट। सो what we are seeing is Nifty volume profile level is coinciding exactly with gain square of 9 levels, which is at 21,683. So what is next from here? That's the question. यहां पर
अगर आप देखोगे बहुत ही क्लियरली 21 स्पॉट चार्ट के हिसाब से, फ्यूचर्स का चार्ट है. इफ आई लुक एट अ स्पॉट चार्ट, दिस लेवल इज नथिंग बट the gain level of 21,683. This is the gain level. And because this is the gain level as per the spot chart, ये spot का value है. And जो chart plot देख रहे हो, this is futures plot. Now, if you're looking at this entire movement of Nifty, after forming a top around here, we got a very sharp move on the downside and ignore the spike. This is, you might have to ignore the spike. And we can clearly see these spikes you can ignore. I mean, these things are freak trades which might have happened because of one lot traded there, or it might just be a freak capture on the chart. So you have to ignore such kind of freak things, which happens maybe at 9:15. So यहाँ पर अगर आप देखेंगे बहुत ही clearly, after a fall, this was a very sharp fall that we can clearly see on the downside. Now the point is, this fall was completely way. This was rise of P. We are in C, but the problem is there is no absolutely momentum on the downside. और यहाँ पर फिलहाल momentum नहीं है, and that's the challenge. That's why the way to trade this market is to trade within a broad range. Broad range कौन सा है हमारा? 21,840 on the upside and 21,000 नीचे में अगर हम देखेंगे 21,550. That's the broad range within which you have to trade the market. To trade the range, the best strategy in options that you have to adopt is strangles. Not to buy, but to sell, strangle. And to be quick enough to do an adjustment so that you are moving sharply away in case sharply closing your position in case there is a move which happens. So quickly, I'm so sorry, quickly closing your position in case there is a sharp move that happens on either of the side. So you have to be quick enough to get out of the losing leg and holding on to the winning trade so that और ऑप्शंस मंत्र में हमने ये सारी चीजें देखी थी. Now I'll go take you back to the chart of Gann square of 9, which is very crucial. So for trading in the current market, I think scalping kind of a trade will work best. Do you know what is scalping? Scalping is sitting in front of the screen, making out 20, 30, 40, 50 points out of Nifty, getting out quickly, getting in quickly, try to make the most within very short span of time. It can be as short as 1 minute, it can be as short as half an hour. Kind of span, jo mila lo, jo gaya jaan do, and do it very quickly. That is scalping. Now, the current market is giving classic opportunity for scalpers, but is not giving much of the opportunity for positional traders. That's how the market has been moving. And यहाँ पर okay, Ayushi is here. She is saying that I made a strangle of 21,400 put, sell, and 21,900 call. 22,000 call, also 22,100 call also. Okay, that's looks fine, but 21,400 looks little aggressive. Given the volatility, I would be betting a little away from there. क्योंकि क्या है, कल अगर gap up gap down हो जाए, I don't want to be losing side of it. But ठीक है, strangle है, you have created that strangle, fair enough. Doesn't look, I mean, looks like a correct strategy to do. And if you're looking at the Gann square of 9, let me just share the chart quickly. दिस इज गैन स्क्वायर ऑफ 9, और जो हम बहुत ही डिटेल में काल चक्र में करेंगे. सो गैन स्क्वायर ऑफ 9, पीपल ऑन यूट्यूब, आर यू देयर विथ मी? आपका कमेंट ही नहीं है यार, पता ही नहीं चल रहा आप लोग देख रहे या नहीं देख रहे, चैट कर रहे नहीं कर रहे. एटलीस्ट अपने कमेंट डालिए कि आपको वो स्क्रीन दिख रहा है, येस और नो डालिए. और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक इट, कमेंट इट, so that I know every one of you are there with me. So it's best to keep it lively, right? अगर लाइवली होता है तो मजा आता है, क्योंकि पता चलता है आप लोग हो सामने, सो नहीं गए हो. मेरा तो कोशिश यही है कि आई डोंट मेक यू स्लीप, बट आई एम कंबाइनिंग नाउ डिफरेंट टेक्निक्स basis of which I am trading options, forming strategies, and I'm just sharing that across. Okay, यहाँ पर अगर हम देखेंगे 21,683 is the magnet for the market. So we can clearly see that 21,683 is the gain level, basis of which prices are just mean reverting around it, not doing anything. आज लग रहा था शायद ब्रेकडाउन होगा, लेकिन नहीं हुआ, which means आज का जो लो बना है निफ्टी पे,
21,550 के आसपास का becomes very very crucial. If it breaks this level again now, then I think we will head towards 21,098, which is the gain square of 9 level. If we break today's low of 21,550 spot, if we do not break this level, if we do not break this level, we manage to close about today's high. अभी भी प्रीवियस हाई के ऊपर बंद नहीं हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना। थ्री कैंडलस्टिक रूल, थ्री कैंडलस्टिक रूल क्या है, लेट मी आस्क यू। चलिए देखते हैं कितने लोगों को पता है ये सारी चीजें। यहां पर लेट मी सी हाउ मेनी पीपल आर देयर हु अंडरस्टैंड दिस थिंग। दिस वाज अ बेरिश कैंडल, डू यू एग्री विथ मी? दिस वाज अ बेरिश कैंडल। पोस्ट दिस कैंडल, नॉट अ सिंगल क्लोज, नॉट अ सिंगल क्लोज अगर आप देखेंगे has happened above the prior candle high even now. एक भी कैंडल ने अभी तक प्रीवियस हाई के ऊपर बंद नहीं किया, ठीक है। साथ ही में फ्राइडे को लूनार साइकिल था और हमने अभी तक पॉजिटिव ट्रेंड वापस रिज्यूम नहीं किया लूनार साइकिल पे, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन भाव भगवान छे, प्राइस एक्शन इज इंपॉर्टेंट एंड सो वी हैव टू लुक एट प्राइस एक्शन। सो फ्रॉम हियर प्राइस एक्शन इज क्रूशियल। टुमारो मॉर्निंग 9:45 AM का टाइम नोट कर लो, दैट टाइम इज क्रूशियल। इफ बाय 9:45 AM एंड बाय दिस टाइम 9:45 प्राइस एक्शन अगर पॉजिटिव नहीं होता तो मार्केट नीचे जाएगा। अगर 9:45 से पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिल गया हमें, मतलब फर्स्ट आवर, फर्स्ट 30 मिनट्स, फर्स्ट 15 मिनट्स पॉजिटिव रहा और मार्केट ने हाई ब्रेक किया, तो शायद वापस से कुछ पॉजिटिविटी कल के दिन में दिख सकती है। सो यहां पर फिलहाल जो हम देख रहे हैं, वी आर लुकिंग एट गेन स्क्वायर ऑफ 9 लेवल एंड 21,683 इज दिस लेवल, विच इज ऑल्सो द वॉल्यूम प्रोफाइल एरिया. So 21,683 is not only the gain level, but is also the level which is having huge volume by big players. What is volume profile? That we have done in options mantra in detail. So looking at the overall scenario, looking at the overall movement, the market is still on the sell on rise mode. There is nothing that has changed. But if tomorrow we manage to, first hour candle, we manage to take out today's high, then there will be an indication of a positivity. So ये जो चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, ये चार्ट है गेन स्क्वायर ऑफ 9 का. So निफ्टी गेन स्क्वायर ऑफ 9 chart is what I am showing it to you, and basis of this, as I said, we can say 21,683 is the magnet. Okay, so according to this, what should be my setup for इन ऑप्शंस? ऑप्शंस पे कैसे सेट करना है हमें ट्रेड सेटअप इन ऑप्शंस? कैन समवन टेल मी? कैन समवन टेल मी व्हाट शुड बी माय ट्रेड सेटअप इन ऑप्शंस बेसिस ऑफ दिस? स्ट्रैडल एट 21,700 कर सकते हैं, मेक सेंस। लॉन्ग स्ट्रेंगल नहीं करना है यार, हमारा तो मीन रिवर्ट हो रहा है, मार्केट ट्रेंड नहीं कर रहा है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट को ट्रेंड होना चाहिए तो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प. यू कैन डू अ शॉर्ट आयरन फ्लाई, ओके, शॉर्ट स्ट्रेंगल, ओके, ठीक है। और स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे होगा हमारा ऑप्शंस पे? स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के लिए विल गो बियॉन्ड 22,000, अराउंड दैट एरिया, बिकॉज दिस इज द अपर एंड ऑफ द रेंज एंड परसों ही एक्सपायरी है. सो विल गो अराउंड दैट 22,000 का रेंज ऑन दी अपसाइड, एंड नीचे मैं थोड़ा लीवे ज्यादा दूंगा बिकॉज ऑफ दी वोलेटिलिटी दैट वी आर करेंटली सीइंग, एंड 21,200 का रेंज थोड़ा सा इसके पास में, बिकॉज दैट आई नो इज द सपोर्ट. 21,200 should be okay and doable. So that becomes my range for trading in forming an option strategy around this. So हमने किया क्या? जो ऑप्शन बायर है वो स्कैल्पिंग करो तो पैसा बनेगा, जो ऑप्शन सेलर है उसे ऊपर और नीचे का स्ट्रेंगल राइट करना है तो पैसा बनेगा. जो पोजिशनल ट्रेडर है यहां पर पैसा नहीं बनेगा, बिकॉज यहां पर मार्केट में पोजिशनली जा रहा है नीचे, मोमेंटम नहीं बन पा रहा है. तो मैंने भी जो पोजिशनल ट्रेड था उसे थोड़ा सा लाइट किया और
ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में कन्वर्ट किया है मेरे पोजीशंस को। सो प्रीमियम इतना डीप ओटीएम में प्रीमियम नहीं अगर मिल रहा है तो थोड़ा नजदीक ले आओ, तो यू विल गेट सम लिटिल डिसेंट इनफ प्रीमियम। दैट्स हाउ यू हैव टू प्ले दिस मार्केट। प्रॉब्लम क्या हो रहा है ऑप्शंस में, अगर आप देख रहे हैं तो जो ऑप्शंस का प्रीमियम भी है, अगर वो 12 रुपया है तो 12 का 20 रुपया बहुत फास्ट हो रहा है। ओके, दैट्स द प्रॉब्लम, and that's where it is resulting into a sharp up move of the premiums. So I am little skeptical. So the best thing you can also do is a jade lizard kind of a strategy, or you can hedge your strangle by buying deeper out of the money option. So बहुत सारी चीजें हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट कम करने के लिए भी आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू प्ले अराउंड इन ऑप्शन, बट उसमें मैं नहीं जा रहा। मैं अभी ले चलता हूं आपको वन फाइनल थिंग। सो हमने क्या देखा, हमने प्राइस एक्शन के बेसिस पे देखा, 3 कैंडल रूल्स चेंज नहीं हुआ। वॉल्यूम प्रोफाइल देखा अभी तक, गैन लेवल देखा 21683 is acting like a magnet. What we are going to do now is we are going to shift from here and look at a 15-minute chart for time cycle basis of first time cycle. Shall we do that? Shall we go and look at the auspicious time of Nifty? When is that coming? And what should be the strategy? चले फर्स्ट टाइम साइकिल के बेसिस पे देखते हैं, कुछ क्लू मिल रहा है क्या वहां से हमें। चलिए देखते हैं बहुत ही क्विकली। नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ माय फेवरेट चार्ट विच इज टाइम साइकिल एंड नियोवेव। ऑफ कोर्स नियोवेव में फिलहाल तो रेंज में, तो वी हैव टू वेट फॉर मोर क्लैरिटी, बट यहां पर देखते बहुत ही क्विकली। सो लेट मी एक्सप्लेन अबाउट what is Hurst time cycle. Now, J.M. Hurst was an engineer and he said that there are certain cycles that work in the physics. Now, जो physics में काम कर रहा है वही चीज stocks या stock market पे भी शायद काम करनी चाहिए। Now, on that basis, he came out with the concept of time cycles and he started applying it on charts, on weekly time frame, monthly time frames, daily time frames. I started applying that even on 15 minutes time frame. So इस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने के लिए हमें वैसा सेटअप भी मिलना चाहिए। जरूरी नहीं है हर साइकिल पे एक ट्रेड सेटअप मिले, लेकिन अगर सेटअप मिलेगा तो सुपर्ब मूव मिलेगा कंबाइनिंग विद प्राइस एक्शन। Now, if I'm looking at these vertical lines, I'm not getting into the detail of plotting these. I'm explaining you these are time cycle lines. ये कौन सी टाइम आपको दिख रही है यहाँ पर, ये जो वर्टिकल लाइन मैंने प्लॉट कर रखी है, what is the time that you see as per this specific cycle? What is the time that you are seeing here? It's a 43 period, but कितने बजे ये ड्यू कब है? It's due on Valentine Day यार, 14th of February, Valentine Day पे ड्यू है 9:45 AM को। Okay, the time that you see here is on Valentine Day. Now, that's a coincidence. Okay, so फिलहाल तो market is celebrating its Valentine with gain magnet of 21683. देखते हैं 14th Feb को धोखा देता है क्या उसे। 14th Feb को क्या वो शुरू करता है अपना नया लव अफेयर by breaking away from the 21683 or not? That is yet to be seen. So let's just see that. So this is 14th of Feb. And by the way, एक अच्छी चीज ये है कि ये वेबिनार्स मेरी वाइफ नहीं देखती है, अदरवाइज उसे पता रहता कि 14th Feb वैलेंटाइन डे है, मुझे याद है। तो ये याद मुझे मार्केट के कारण है और ना ही के दूसरे कारण से। तो चले जाने दीजिए, फिलहाल तो 14th of Feb पे 9:45 का टाइम लिख देते हैं यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कल का फर्स्ट आवर ओपनिंग। सो ओपनिंग आवर, जैसे कहते हैं ना क्रिकेट में ओपनिंग बैट्समैन के ऊपर काफी सारी चीजें डिपेंड करती है, वैसे ही कल का जो ओपनिंग टाइम है मार्केट का वो ओपनिंग बैट्समैन की तरह है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करेगी कि ओपनिंग बैट्समैन कैसे प्ले आउट कर रहा है। इसके 2-3 कारण है, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। आर यू विथ मी एवरी वन ऑफ यू? सो पहला कारण तो यहाँ पर देखते हैं प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन मतलब क्या है? ये जो लेवल है यहाँ से हमें रिजेक्शन आया था नीचे की ओर, मतलब वो अगर वापस से अटेम्प्ट करता है और निफ्टी ये लेवल के ऊपर एक्सेप्टेंस देता है, तो ये लेवल बन गया मेरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल।
which is also around 21,770. This becomes my very important level on the upside. ठीक है, नीचे का जो लेवल है, जो सपोर्ट है, जो ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो बन गया मेरा 21,620. So this level should not break on the downside. So Nifty opening hour is crucial tomorrow, as there is a time cycle or near 9:45 a.m. This, along with price action, will give classic trading opportunity. ओके, ये ध्यान रखना, बिकॉज प्राइस एक्शन कंबाइन करना है हमें, क्लासिक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्राडे एंड मे बी पोजिशन, ये दोनों के ऊपर हमें वेट करके चेक करना होगा. यहां पर अगर हम देखेंगे, अगर कल 945 तक निफ्टी 21,770 21,780 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन करता है, then I can say with very high conviction we might have a good opportunity for a move back to 21,850 के आसपास तक का मूव मिलेगा, जो ये लेवल का स्पाइक है. ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए मैं कह रहा हूं, मतलब इंट्राडे में भी मिल गया तो ठीक है. और अगर आप ऑप्शन कॉल पुट राइट कर रहे तो वो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि परसों ही एक्सपायरी है. अगर ये नहीं किया, सपोज फॉर एग्जांपल कल नीचे आके फिर ऊपर गया, चलेगा. अगर ऐसा नहीं किया और इसने 21,620 ब्रेक कर दिया, तो गड़बड़ बहुत है, क्योंकि अभी टाइम के बावजूद भी प्राइस एक्शन कंफर्म नहीं कर रहा है. जैसे कि मैंने कहा, प्राइस भाव भगवान से, समय बलवान से, and you have to club both price and time together. So despite of price action, if it is not confirming, which means that's going to be a challenge. And similarly, आज जो CNBC पे when I was talking about it around the 230 245 also, I told the same thing. 21,770 is very important. If it breaks, we'll go towards 21,840 21,850 levels. And this is the rational reason behind what I say when I say that. This is the reason which is I'm looking at a pattern, price action plus time, and इसके बेसिस पे कन्विक्शन बनता है. क्योंकि टाइम अगर साथ में है और प्राइस एक्शन कंफर्म कर रहा है, तो दोस्तों जो कन्विक्शन बनता है, और कुछ मुझे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती. सो ये दोनों चीजों के बेसिस पे यू कैन कंप्लीटली कंबाइन करके चेक कर सकते हो ये फिलहाल पे ट्रेड सेटअप क्या है. एंड आर यू विथ मी? So I know the mean reversion is 21,683, upside range 21,850, lower range 21,620 right now, and 550. So basis of this, now you can form a classic trading setup, trading strategy in options. Are you with me? Am I making sense? So you can apply these kind of concepts of time even on stocks like Hindalco, Paytm, as I said earlier also. You can apply these concepts of time on any stocks, any index, and you can do a very classic opportunity. You will get it from trading perspective. So you can do this on any and every time frame आप कर सकते हो. And that's the beauty of it. So, but उसके लिए you need to know these concepts of time, you need to know the concepts of GAN. In fact, GAN square of 9, ये तो मैंने खाली निफ्टी पे बताया. You should check GAN square of 9 on stocks like Maruti, DLF, Bank Nifty, Fin Nifty. ये सारी चीजों पे मैंने प्लॉट कर रखे GAN square of 9. अगर आप इन पे GAN square of 9 अप्लाई करोगे, you will see amazing ways in which even the stocks are moving classically around these gain levels. It is simply super. So gain levels के आसपास मूव हो रहे. बैंक निफ्टी पे भी देखते हैं हम कि बैंक निफ्टी का टाइम साइकिल कौन सा है और बैंक निफ्टी पे क्या लग रहा है. बहुत ही क्विकली देखते हैं. ये है बैंक निफ्टी का चार्ट. And if you look at Bank Nifty chart, we are standing right at the time cycle of Bank Nifty, which is just around 3 p.m. today. लेकिन थोड़ा सा लीवे देना है. तो बैंक निफ्टी पे अगर कल के दिन में ये हाई निकल जाता है, the high is 45,750. If Bank Nifty manages to take out the high of 45,750,
we will have a classic opportunity for short-term buying in बैंक निफ्टी बिकॉज प्राइस और टाइम सिंक में आए. सो कौन सा लेवल है दोस्तों, मैं लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए. 45,750 is the level for बैंक निफ्टी. आई एम गोइंग टू कीप अ क्लोज वॉच ऑन. एंड नीचे का जो ये लेवल है वो है 45K का लेवल. सो फॉर मी, इफ आई हैव टू फॉर्म अ वेरी classic trade setup, tomorrow bank nifty needs to break above it, then only I will be bullish. If it does not break, nothing change, but time is there. अगर कल 1 घंटे में, ठीक है, till 10:15 अगर बुलिश कैंडल नहीं बनी तो गड़बड़ है. मैं बाकी अपडेट्स मॉर्निंग में भी दूंगा, लेकिन बुलिश कैंडल क्यों बनी, क्योंकि समय सही है और प्राइस एक्शन फिर भी अगर सही नहीं हुआ तो गड़बड़ है. लेकिन समय, which is time and price, if both clubs together, then you have a very superb way of looking at the market. So bank nifty, I'm going to keep and swings are very fast and wild. If you look at bank nifty, nifty, fin nifty, सब में swings बहुत ज्यादा है. You need to have a strategy in place, especially, and you have to trade options, because once you combine the concept of time, trading options becomes much more comfortable and easier for everyone. Am I making sense? Are you with me? बैंक निफ्टी 54 डेज टाइम साइकिल पे व्यू चाहिए आपको, तो देखते हैं बैंक निफ्टी का टाइम साइकिल डेली टाइम फ्रेम पे. लेट मी जस्ट प्लॉट अक्रॉस. दिस इज विजिबिलिटी अक्रॉस ऑन मिनट डेज से निकाल देते हैं. एंड दैट्स अ बैंक निफ्टी 54 डेज टाइम साइकिल विद गेन स्क्वायर ऑफ 9. बैंक निफ्टी का गेन स्क्वायर ऑफ 9 लेवल्स है, यहाँ पर मेंशन्ड है. 46,118 इज द गेन लेवल. ये सारी चीजें दोस्तों हम बहुत डिटेल में करेंगे काल चक्र में, अभी टाइम नहीं है, मैं खाली आपको बता रहा हूँ. 54 डे का साइकिल बैंक निफ्टी का इज गोइंग टू बी अराउंड 26 ऑफ फेब के आसपास है. तो ये जितनी भी वोलेटिलिटी देख रहे हो, ये सब खत्म होने वाली है 26 फेब के बाद बैंक निफ्टी में, और 5 मार्च के बाद निफ्टी में, बिकॉज उसके बाद साइकिल, बड़ा वाला साइकिल जो है वो वापस ऊपर टर्न हो रहा है. सो यू नो, basis of these bigger cycles, we will be able to take a much better trade. The volatility right now that you are seeing big swings either side, it is more like a sideways time correction on Nifty, price correction in Bank Nifty, which is going to end by 26th of Feb in Bank Nifty and 5th of March in Nifty. So these are the dates and these are the times that you can see from these all charts. I'm asking you, do you want to learn this complete science of GAN application with Hurst time cycles on daily, on 15-minute chart, apply it on your stocks and apply the indicators like time indicator जो मैं use करता हूँ, KST with Pring special K kind of things. ये सारी चीजें करनी है क्या आपको? अगर ये सारी चीजें आप सीखना चाहते हैं, खुद से करना चाहते हैं, so 24th and 25th Feb को मेरा काल चक्र का एक सेशन है, 2 days का प्रोग्राम है. You can be a part of Kal Chakra, where we will be looking at these gain levels. We'll look at Hurst time cycles. We'll look at price target using time. We'll look at indicators like KST. We'll look at centered Bollinger Bands method. We'll club these things together and we'll apply it together on the chart. So you can be a part of Kal Chakra. We have limited seats. We have few seats left even now. So my colleague will share across the link. And Bikash Saha is saying, I've already enrolled. Ayushi is enrolled. Excited to learn new things. Nifty के नियो वेव के बारे में हम बाद में बात करेंगे. And यहाँ पर link is shared across by my colleague. And please share कर दीजिए YouTube पे भी. So you can be a part of this where we'll be learning this complete science and in detail. So दोस्तों, आज का सेशन में मजा आया कि नहीं आप लोगों को जो हमने किया? इफ इट इज इंटरेस्टिंग, डू पुट योर कमेंट्स, डू लाइक, डू शेयर इट अक्रॉस, सो दैट आई नो कि यार आप लोगों को मजा आ रहा है, सो दैट आई कीप डूइंग दिस काइंड ऑफ सेशंस ऑफ एजुकेशन. दिस इज प्योर एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक. एंड अगर आत्मनिर्भर बनना है आपको, टू बी एम्पावर्ड, देन यू नीड टू कीप लर्निंग दिस थिंग्स. The way I apply it, I'll teach you every single thing. Okay, you can apply these techniques yourself also. It's not that difficult. Dev Kumar is asking, will this course make us eligible to make out GAN levels on any chart? Yes. You can apply GAN square of 9 on any stock,
एनीथिंग दैट यू आर ट्रैकिंग आप खुद से अप्लाई कर सकते हो. Okay, you can do that. All your sessions are amazing, Ranjan, Maheshwari. Great to see you also here. Excellent knowledge. Thank you very much. And do not forget to subscribe on YouTube. मैं एक बहुत quickly poll भी ले रहा हूँ दोस्तों. Asking you which path to financial freedom. These are auspicious time, right? Which path to financial freedom? Kal Chakra is 24th, 25th of February, Saturday, Sunday, 2 days program will start in morning. इसके पहले आप अगर आज रजिस्टर करें, I will also give you the pre-session videos so that you will be able to go through that and you will be able to apply that. Dev Kumar, yes, this course will make you eligible to apply gain levels, gain lines on any stock that you want to trade. You can definitely do that. And Brahmastra is कहते हैं ना बहुत मार्केट में फाइट करने के लिए ब्रह्मास्त्र की जरूरत है. That is what we do in this ब्रह्मास्त्र program. And यहाँ पर ब्रह्मास्त्र में अगर आप जुड़ेंगे तो काल चक्र will be complimentary with you. Please share the link across to everyone again. Can you do that? And yes, और अगर आप ब्रह्मास्त्र के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं, my colleague will share across the token link also. And even for काल चक्र 10,000 का एक टोकन लिंक है, आपके सामने शेयर कर देंगे. And on the page you can then register yourself. लिंक शेयर कर दीजिए सबके सामने. For the MOC offer link भी शेयर कर दीजिए. MOC is master of cycles. And also share the token link. I think I've asked you a couple of times. Can you do that, please? And यहाँ पर है. Not the two links. So ये वाला नहीं. Let me just do that just very quickly. Yes, so share this link. I'll just go on the screen and you can be looking at it and you can register. I'm open for questions, guys. I'm open for questions. If you have anything, I'll be more than happy to answer them. So दोस्तों ये रहा link. You can go here. You can register yourself for the Master of Cycles काल चक्र program. And साथ में आप ब्रह्मास्त्र का भी टोकन लिंक शेयर कर दीजिए लोगों के साथ में. And do share it across even on YouTube. You can get all of these things that we are looking at. We look at lunar cycles in much detail. We look at Hurst cycles, GAN forecasting methods, and FLD, which is price target using time, and Pring Special K. So we'll combine Pring Special K with KST. KST classic short term indicator है जो बहुत अच्छे से कैप्चर करता है 15 मिनट का मूव. Pring Special के उसी को थोड़ा सा और बड़े वे में दिखता है. So it's a classic combination. I'm doing it for the very first time. The combination of Pring Special K with KST indicator, I'm doing it for the very first time. And that's what we are going to do here. Ritesh, specific stocks के बारे में हम अभी नहीं बात करेंगे. We'll discuss that for Britannia and other stocks in the Kal Chakra session that you are seeing here. What all we need to attend the course? Do we need to play platform as such as TradingView? नहीं. आपको कोई भी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है. जो भी चीजें आपको प्लॉट करनी है वो फ्री ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म से आप प्लॉट कर सकते हो. सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल. यू कैन यूज द फ्री ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म एंड यू कैन प्लॉट दैट. सो यू डोंट नीड एनी अदर सॉफ्टवेयर श्रीनिधि टू बी a part of to learn about this. Okay, I am taking up another questions. Question का आंसर नहीं दिया. See, there are so many people here. I can't really answer everyone's questions right now, but in Kal Chakra we have limited number of people who are attending, so I'll be ensuring I answer every single one of your questions. Okay, you don't talk about much about open interest. Open interest plot मेरे इधर already ready है और open interest बहुत अगर आप देखेंगे तो 21,800 पे मैंने इनफैक्ट ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए, वहां पर मैंने ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात की है. निफ्टी इज इन ट्रायंगल लुक्स लाइक मेलविन, क्योंकि क्या है कि बहुत रेंज में है, मतलब मोमेंटम नहीं बन रहा है कोई भी डायरेक्शन में. सो पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रायंगल पैटर्न हो सकता है. स्टिल लुकिंग लाइक अ वेरी ब्रॉड रेंज, सो लुक्स लाइक अ ट्रायंगल पैटर्न. एंड सो स्कैल्पिंग में पैसा बन रहा है या शॉर्ट ऑप्शंस में पैसा बन रहा है. डायरेक्शनल में होल्ड में कॉल बाय या पुट बाय में फिलहाल मुश्किल है पैसा बना. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग as of now. So you will have to wait for more price action. भाव भगवान से prices have to confirm, and that is very, very crucial as of now. Okay, how to work on psychology while we have taken any position through
सी साइकोलॉजी के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ स्ट्रैटेजी फर्स्ट इन प्लेस. If you have a strategy, then psychological drama will come down. If you are not having a strategy, you will keep jumping across here, there, and getting confused. So पहली चीज तो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए. दूसरी चीज स्टॉप लॉस सिस्टम में होना चाहिए. तीसरी चीज आपको पता होना चाहिए आप कर क्या रहे हो. अगर आप खाली कुछ भी देख के कुछ भी ट्रेड कर रहे हो तो पैसा नहीं बनेगा. Stocks are getting punished like anything. You can see what happened to Hindalco Paytm. Hindalco is behaving like Paytm. And at the same time, if you know, so you need to have a very clear plan, very clear strategy, so you don't have to really worry about psychology. So psychology के बारे में हम बहुत डिटेल में बात करते हैं ब्रह्मास्त्र में, just in case if you want to be a part of that. To apply what we have learned, Kal Chakra in trading, how much capital is expected? देखो कोई भी ट्रेड करने के लिए आई वुड से यार एटलीस्ट 1 लाख रुपया तो चाहिए, नहीं तो क्या ट्रेड करोगे आप उसके बिना. So there are people who says that I have 50,000 as capital. Trust me, 50,000 of capital, you can do an option buying, but you can't really do money management there because you can't do risk management much. It is like 2-3 बार अगर प्लस माइनस हुआ तो उसी में आपका कैपिटल चला जाएगा. So it's very important that you are able to do it correctly. So that's very, very important. So at least 1 lakh is capital is what I am asking you should have. Nikhil is saying, I want to learn option trading, basic chart learning, then want to go for Kal Chakra. You can do that. Kal Chakra is about time cycles. It's not about options. It's about time cycles and how to trade stocks. You can apply it on stocks. You can apply it on options. You can apply this on any and everything. So it's about stocks trading. If you want to learn about options, you can opt for options mantra. You can drop your number and my colleague can explain you, which we do it in Brahmastra session. Link जो आपने share किया, it is shared only to host and panelists. Please share it across to everyone. You have not shared to everyone. Okay. The link of MOC offer, you have to share it to everyone, please. Okay. Will there be any group in which we will get in after Kal Chakra? Post Kal Chakra, you can post your queries in Traders Forum, Dev, and you will be able to post your queries. I'll be more than happy to answer all of their queries, doubts, whatever you have. You will be able to do that. There will be a follow-up session. And guys, we have a follow-up session this week for Sutra of Waves, where all the mentees are also invited. So I'll schedule it for Thursday. Are there mentees here? The Brahmis, the Brahmastra participants, and the Sutra of Wave participants of the current batch, and Brahmastra participants of all the past many years of batches. Everyone will be invited for the Q&A session on NeoWave, which is going to happen, where we will be discussing much detail about wave theory. So don't worry, we will have it most probably on Thursday. So stay tuned and stay ready for that. MOC or Kal Chakra, is it same? Yes. Kal is time. Chakra is cycle. So it's time cycle. I thought that name is much more apt. And MOC is master of cycles. So that's also an apt. So English में बोलते हैं master of cycles. हिंदी में देखेंगे तो Kal Chakra. That's one and the same thing. That's why I mention it as master of cycles so that you are aware. Awesome, guys. So really love talking to you all today about options, about volume profile, looking at Hurst time cycle, looking at 15-minute chart. And I've opened up the poll. People on YouTube, are you liking it? Yes, then do put your comments out there and do share and like the channel. And साथ ही में, my colleague has not shared across MOC link on YouTube. Please share that again. Thank you very much, guys, for joining in. Love talking to you. And साथ में ध्यान रखना दोस्तों, ये हमारे पास में limited seats है. Full होने के बाद registrations will be closed. And because you are attending the session today, I have given you the offer, which is actually closed, the pricing and everything for today, because you are a part of this webinar right now and you are seeing my video. So that offer stands as of now for whoever is here. Thank you very much. Have a wonderful time. Become a wonderful trader. आशीष क्याल साइनिंग ऑफ. और जाते जाते दोस्तों, वो ऐप आशीष क्याल का प्ले स्टोर पे है, डाउनलोड करना ना भूले. क्लिक करिए, डाउनलोड करिए प्ले स्टोर पे. तो वहां पर कम्युनिटी भी है, डिस्कशंस भी होगा, बहुत सारी चीजें. सो यू कैन डू दैट. थैंक यू वेरी मच. हैव अ वंडरफुल टाइम.